दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यार, मैं आ चुका हूँ वापस से लाइव स्ट्रीम में। और जैसा कि आप देख रहे होगे हम क्या खेलने वाले हैं। तो मैं ये सिलेंड्रीना मतलब पुरानी गेम है, मुझे पता है। काफ़ी बंदे बोलेंगे भाई पुरानी गेम खेल रहा है तू, लेकिन यार ये गेम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्केरी है। मतलब जब खेलेंगे तो यार पता चलेगा आपको, सच में बहुत ज़्यादा स्केरी गेम है ये। स्टार्ट कर देता हूँ मैं। इजी, मीडियम या हार्ड। भाई मेरा नाजुक दिल है, इसके लिए मैं थोड़ा मीडियम ही यूज़ करता हूँ। ये मतलब मैं पता, अब एक तो मैं रात के 3 बजे, यार देख लो आप, 3:35 को वीडियो बना रहा हूँ। तो मस्त, ये गेम काफ़ी मस्त है यार, क्या ही बताऊँ। बचपन में मतलब जब छोटा था तब बहुत पुराना गेम है ये आप लोग भी जानते होंगे। इसे खेलने में जो ही मज़ा आता है। बे भाई आवाज़ कम है यार। चली गई चली गई चली गई। प्रो, इसने डरा के ही रख दिया पूरा। तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं आई होगी शुरुआत से ही। तो वापस से मैं बोल ही देता हूँ। यार स्वागत है आप सभी का इस गेम में। मतलब इस गेम को तो जानते ही होगे यार, पुराना गेम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरावना गेम है। मैं ऊपर से ये गेम 3:36 को खेल रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर टाइम 3:36 हो रहे रात के AM। ये गेम खेलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्या ही बताओ यार। मैं खेलने वाला था द वॉकिंग डेड, लेकिन ये खेलने लगा क्योंकि मैं सोचा यार इसमें थोड़ा आपके साथ में डर जाता हूँ। सुन से क्या, अबे भाई पीछे नहीं देखने वाला हूँ मैं, कसम से यार। मतलब डर लग जाता है। चली गई होगी, आई होप भाई 3-3 बार तो नहीं होता है। चली गई भाई। मतलब ये कोई भी ये नहीं बोलेगा यार, मतलब इसमें सच में डर लगता है। ऐसा अगर कोई बोला ओवर एक्टिंग का 50 रुपया काटो कमेंट में, तो भाई 100 रुपया मिल रहा है इसमें और 50 रुपया ले लोगे, क्या मिलेगा। तो सच में जो भी है रियल है। मुझे मतलब डर लगता है भाई, अगर बेचारे मैं चैलेंज लगा सकता हूँ कि खेल के दिखाओ भाई अकेले गेम, नहीं फटके हाथ में आ जाएगी ना सच में। एक तो मैं पहले ही सोच रहा था इस गेम को खेलूँ या नहीं खेलूँ यार। और ये तो साली जब से मतलब इतनी बार नहीं आती है भाई, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद ही आती है, इतने बार नहीं आती है। चली गई। ओ भाई डर लग रहा है, सच्ची में डर लग रहा है भाई, क्या ही करूं। तो अकेले खेल रहा हूँ, डोर इज लॉक्ड। अरे भैया क्या, अबे ये क्या है?
साहब क्या था ये? ऐसे गेम और कोई करता है क्या? इसकी तो ऐड आ गया भाई। ये क्या मतलब कोई इसमें ऐड दे दे। अभी इसका थीम सॉन्ग आ रहा भाई, क्या ही खतरनाक है, डेडली। जब सामने उड़ते हुए आया था ना भाई, मेरे कसम से हार्ट अटैक आने वाला था। अभी पहला ही चालू है और कुछ मीडियम पे ही खेलेंगे हम। शुरुआत से खेलना पड़ेगा भाई साहब। मुझे लग रहा है वो मेरे पीछे आ गई है। पीछे नहीं देखूंगा मैं। चलो एक बुक मिल गई। मैं से पीछे ही जाऊंगा, पीछे देखूंगा ही नहीं। अरे भाई चली गई। भाई कसम से गांड फट रही है। क्या ही बोलूं भाई, इतना मतलब अचानक से आ जाती है मतलब। अबे भाई क्या, इसके अंदर ही है वो। अब भाई झांक के देख रही थी, अब चाहे पीछे वीडियो करके देख लो। भाई इस साइड देखता हूँ, इधर कुछ आएगा नहीं। पानी पी लेता हूँ भाई कसम से। लोग हार्ट अटैक दे के ही मानेंगे यार। पानी पी लेता हूँ जल्दी से। सब मैं अपने पास में ही रखा हूँ पानी वानी की, कुछ अगर दिक्कत हो जाए तो फिर मतलब भाई मजाक है क्या? रात को ऐसी गेम कोई खेलता है? बुक अभी एक ही मिली हमको। ओके भाई दूसरी बुक मिल गई। इसे टोटल 8 बुक ढूंढनी है और 8 बुक ढूंढ ली तो फिर ये स्केप हो जाएगा अपने आप ही। ये ख़त्म हो गया मतलब पीछे वो मेरे है। मैं अभी शर्त लगा सकता हूँ पीछे है वो मेरे। अबे नीचे देखना। चली गई भाई। इस गेम को कंप्लीट करके यार एक बार तो स्किप करके हम लोग फिर वॉकिंग डेड खेलेंगे। डर लग रहा है। अरे भाई ये फिर से आ गई। अरे भाई चली गई हरामी। कुछ ज्यादा ही डरा रहे यार लोग, मतलब इतना थोड़ी आते एक बार में दोनों जन ही आ रहे हैं। अरे भाई ये क्या है अभी? ओ भाई साहब ये क्या है? दरवाजा भाई दरवाजा बंद करने का कुछ होता ऑप्शन, इसको कड़ी लगा देता है यहाँ पे। क्या है भाई, क्या अंदर जाऊं या नहीं जाऊं? क्या होगा यार? जाता हूं अभी, क्या ही कर सकते हैं। भाई भाई ये लोग हार।
कि तो कोई बोलेगा नहीं भाई, ये बकवास गेम है, कोई बोलेगा ही नहीं। गांड में दम होगा तो यार अकेले खेल के दिखा देना, वो भी रात में। बे यार ऐसा रास्ता क्यों बंद है? मेरे को मालूम था पीछे ये हरामी। सामने जैसे रास्ता एंड होता है ना, ये हरामी पीछे पहुंच जाती है कैसे तो। चलो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, उसे खाली देखना नहीं चाहिए तो हम बच सकते हैं। भाई 3 बुक है और हमको 7 चाहिए, नहीं 5 चाहिए। इधर पायल की आवाज़ आ रही है, साथ में मुजरा कर रही है शायद सिलेंड्रीना। ये रास्ता ख़त्म होगा शायद आगे। अरे मालूम ही था पीछे है। अरे अभी ये सिलेंड्रीना से इतना डर नहीं लग रहा है। बीच बीच में जो अलग अलग भूत आ रहे भाई, मतलब वो तो सांस ले रहा हूँ भाई मैं। इस साइड नहीं गया था शायद, ये वही रास्ता है यार, ये भूल भुलैया है ब्रो। क्या ये इनसे वही पे आ गया। ओके ये क्या ये बोलो, कान फट रही है मेरी। भाई इतना मतलब लाइक कर दो यार, आदमी का दिल बाहर आ जाएगा सच में। इतना मतलब इतना बहुत डर लग रहा है मेरे को। ये एंड है यार यहाँ पे। ओके कीज यूज, मेरे पास एक की थी यार भाई, मुझे पता ही नहीं था मेरे पास एक की है ब्रो। क्या है ये? अबे यार जाना है। तकलीफ क्या है तुझे? ओ भाई सब प्लेन घर क्यों है यार यहाँ पे? ऐसे जगह पे वो हरामी रहती है। वो वाला भूत ना है भाई, उड़ने वाला भूत नहीं आना चाहिए। वो आता है तो फिर मतलब लगता है। अरे भाई कान फट रही है, बंद है रास्ता। नहीं है पीछे। तो पहले से मेरी तबीयत खराब है यहाँ पे, और तबीयत बिगड़ जाएगी। कहाँ से आया था यार मैं? भाई साहब ये कोई और जगह है। तो चाबी थी क्या यहाँ पे?
इतने देर से दिखी नहीं है भाई वो। कुछ तो गड़बड़ है। ये शांति, तूफान के पहले की शांति है। अबे भाई ये तो वहीं पे आ गया यार। मैं नहीं 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 नहीं, ये दूसरी बार है, ये दूसरी बार है। पहली बार मैं कि वो वाला तो गेम ओवर हो गया था। ओके। अबे फिर से आ गई। नहीं इधर नहीं, सिलेंडर मत आना अभी। अभी वो मेरे पीछे ही होगी तो मैं आगे जाऊंगा। अबे मुड़ गया, मुड़ गया। ये क्या हो गया, मेरा टेढ़ा हो गया। डर लग रहा है यार मेरे को कि भाई 6 बुक्स हो गई है, खाली 2 बुक चाहिए। सच में लिटरली मिल गई ना। ए भाई इसको क्या तकलीफ हो रही है। कौन सी जगह है। अरे जाना यार, काम करने गए यहाँ पे बार बार आ रही है। ओके चैलेंज लगा रहा हूँ, रात में 3 बजे ये गेम खेल के दिखा दो कोई अकेले। इधर अकेले खेलना भाई, मतलब मैं सच में फटे जा रही है मेरी। कुत्ता भौंक रहा है जब से, मतलब दिमाग खराब कर दिया है उसने। भाई 7 बुक्स, सिर्फ एक पकड़ा दो, इसमें निकल जाऊंगा यहाँ से, भाग जाऊंगा। अरे भाई क्या, मेरे पीछे होगी 100%, मेरे पीछे होगी। मैं आगे ही देखूंगा, पीछे नहीं देखने वाला हूँ मैं। यार इसी से तो आया था। पीछे है शायद रास्ता दूसरा। हाँ पीछे ही है, पीछे मुड़ना पड़ेगा। नहीं है नहीं है। अबे चली गई। इधर 2 रास्ते होते हैं, ये पहला एंट्रेंस का रास्ता हो गया और एक और रास्ता होना चाहिए भाई, जहाँ तक कि मुझे याद है। मतलब इसको भाई मैं बहुत टाइम पहले खेल चुका हूँ इस गेम को, और मुझे ये गेम अभी भी याद है। क्या ही बोलूँ, मतलब नेक्स्ट लेवल गेम है ये। कोई भी रहने दो भाई, मैं किसी के साथ में भी चैलेंज लगा सकता हूँ। खेलेगा ना मैं, फटेगी उसकी, सच में फटेगी। अभी मुझे की चाहिए, मुझे 100% लगता है यहाँ पर ही है दो लास्ट बुक। तो यार की ढूंढनी होगी। यार की मिल जाए एक भाई 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 भाई, जब से आबे आबे बोल के मैं भी थक गया हूँ यार। ये मतलब कितना परेशान करेगी। पीछे नहीं, पीछे नहीं होनी चाहिए ये। ऐसे जाऊंगा, पीछे देखूंगा ही नहीं कि नहीं है। अबे की दिख गई भाई, मतलब ऐसे ही मतलब दिख रही भाई। ये क्या है, इतना पतला की कैसे दिखेगा भाई किसी को। अब वो वाला रूम ढूंढना होगा कि ये रहा, इधर होना ही चाहिए।
तो मैं घाटे में चला गया। इधर आया पर की ही नहीं है। मुझे अब लग रहा है कि उसके अंदर ही है। कोई बुक होगी वहाँ पे। जल्दी से कहीं से तो की ढूंढनी होगी मुझे। ढूंढनी होगी। ये शायद से वापस जाने का रास्ता है। थिंक सो। इस साइड से ढूंढते हैं। पर वहाँ पे नहीं मिलेगा तो वापस से इसी से मतलब इस रास्ते में जाके देखेंगे क्या है। ओके, ये क्या है? अच्छा, वो वापस जाने का ही रास्ता था। यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके पीछे की तो नहीं है। की नहीं है यहाँ पे। अबे क्या? अबे उधर खड़ी है वो देख रहे हो वहाँ पे? भाई इधर मुड़ता हूँ तब गायब होगी वो। क्या गायब हो गई? अबे यार ये क्या मस्ती है। अरे मिल जा यार। एक बुक चाहिए हमें अभी। तो मैं मरना नहीं चाहता। इस गेम को पार करना ही है। कहाँ से आए थे? इसी रास्ते से शायद वापस जाने का रास्ता। इधर की होनी चाहिए यार। कितने बार आएगी? मतलब कितने बार? भाई इतने बार नहीं आती है। शायद इजी पे खेलता होगा। मैं पहले इजी पे खेलता था भाई, तो इतने बार नहीं आती है ये। मतलब बहुत पहले के टाइम, बहुत पहले टाइम की बात है, बहुत पहले। यहाँ पर कहीं पे की है क्या? की लॉक्ड है। कोई तो ओपन मिल जा दरवाज़ा। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। दीवार पे तो नहीं है कि? नहीं, की नहीं है वहाँ पे। अबे क्या? अबे क्या? खेलना ही नहीं है बट नहीं खेलना है मेरे को। इतना मेहनत से यार, मतलब कोई ये क्या मतलब ऐड दिखाने के लिए मुझे मरवा दिया क्या इन्होंने? मतलब भाई कुछ भी कुछ भी कर सकते हैं यार ये लोग ऐड दिखाने के लिए। अबे हट जा। यार मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और इस गेम को खेलने की। हम लोग इसे कल खेलेंगे। अभी तो मैं नहीं खेल सकता हूँ इस गेम को। तो फिर हम ये खेलते हैं दी वॉकिंग डेड।
चलो वही खेल लेते हैं भाई, तुम्हें बाद में खेलूंगा। मतलब बेमतलब का चुड़ैल आके चुम्मा ले लेती तो क्या कर सकता है बंदा। तो द वॉकिंग डेड सीजन 1, लेट्स प्ले दिस। स्टार्टिंग में थोड़ा सा खेला था मैंने इसके कंट्रोल्स देखने के लिए, कि आगे देखते हैं। वापिस से न्यू गेम ले लिया है मैंने। स्टोरी समझाने की ज़रूरत तो मुझे नहीं होगी कि आप में से कई ज़्यादा लोग जानते ही होंगे वॉकिंग डेड के बारे में। और वापस सीज़न 1 के बारे में तो कुछ बात नहीं करेंगे। सीज़न 2 जब हम खेलेंगे तब शायद बात कर लेंगे, क्योंकि सीज़न 1 तो काफ़ी बंदों को पता ही है। Well, I reckon you didn't do it then. इसने बोला तो भिखारी क्या कर रहा था चोरी, तो इसका हम लोग। Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Every time? Every time. We got what looks like a 1091 near Page 3X285. All cars have सूरज to be देखे on the हैं तो lookout कैसा for है। 91B in the area. I followed your case a little bit. You being a Macon boy and all. What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big messy trial like that. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. Be advised, medical personnel en route to Hartsfield, very intense. Any of that seem important to you? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. स्टोरी पे हम You नहीं teach there बोलेंगे अगर long? कुछ आगे Going on आता my है तो। 6th year. मतलब ये टॉल करते You हैं meet your wife in Athens? You want to know how I see it? क्या बोले? क्या बोले? Not really. Well, too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Regardless, could be you just married the wrong woman. क्या बोले? पत्नी के बारे में गलत बात बोल रहा है। भाई बोल ही नहीं पा रहा है। All officers are available for incoming 217. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. तबाही चालू हो गई है। I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're All sitting. officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama.
Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Man. Man? Not even close. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other time... बुड्ढे का तो थोबड़ा फूट गया होगा। इसको पकड़ नहीं पाते बुड्ढे को खा रहे हैं। Oh, shit. अच्छी नींद आई। Thirsty. Ah. Fuck. My leg. चोट लग गई है हमको। शॉटगन इधर से ले सकते हैं क्या? Why the hell did he have his gun out? Hey! Hey, officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! भाई रहने दो, उसको नहीं बुलाता हूँ, नहीं तो फिर उठ जाएगा तो फिर आके इधर ही मार देगा। Damn it! चलना भाई बाहर। क्या हुआ? जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ प्लीज। और लगा है मतलब। मुझे लगता है वो मर गया है, ज़ॉम्बी बन गया है वो। पहले मैं शॉटगन लूंगा भाई। Looks empty. मिली नहीं है। It'll be easier to carry with these cuffs off. उसके पास चाबी रहता है। ओके। कोई ले डाला की माँ की भाई, उधर ही गिरा दिया मुंह के सामने हो भी। Officer. Holy shit! वो भाई मुंह की बू है। क्या करना? Get away from me! गोली। चलो जल्दी शॉटगन इधर की।
ऐसी गलती थोड़ी होती है। आ गई। Don't make me do this! छोड़ दे थोड़ा, पूछना नहीं चाहिए। हाय, इसका तो गान फट गया होगा। Help! Go get someone! There's been a shooting! ये और आ गए बाराती। भाई मतलब बंदा है क्या? निकल ली भाई जल्दी से। अरे भाग दौड़े। ये देखो भाई मतलब अबे भाई मतलब पागल है क्या? गिरे जा रहा है। कसम से इसकी फट गई होगी यार पानी। बच गए शायद। अभी आ रहा है क्या? किसी ने तो गोली चलाई है, उस साइड ये लोग निकल लिए। Hello? Anybody? अभी आवाज दे रहा है भाई, मतलब कुछ डर वर नहीं है क्या? ज़ॉम्बी वापिस आ जाएंगे। लड़की इधर ही होगी शायद, ट्री हाउस में। Fill one of those teacups with some bourbon if I could. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Help! घर में कुछ बंदूक मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। Hello? Anybody home? I need a little help. बोल के सीधे अभी कुछ पूछता है क्या? मतलब Coming in. Don't shoot, okay? Hello? I'm not an intruder. Or one of them. These people might need more help than I do. कर सकते हैं क्या? It's fake. Damn. क्या है? 3 new messages. Message 1, lift at 5:43 p.m. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before spring break. Message 2, lift at 11:19 p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta.
please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Marietta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. मर गए शायद आई थिंक शायद नहीं मर गए Daddy? वॉकी टॉकी Hello? You need to be quiet. I'm not a monster. Good. कहाँ पे है ये What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. भैया अबे नहीं नहीं आता अरे तुमको मतलब इसको मारो यार इसका आँख निकाल लो कोई चलो इसे तो मर ही जाएगा बजा दिया मैंने कुछ भी कर रहा है दो 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 मार 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 क्या कर रही है भयंकर Man. Hi there. Did you kill it? I think something else did. Before me, I think. I heard her scream 2 nights ago. Maybe one of the monsters got her. 2 nights ago? Yeah, that's probably what happened. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh, Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. what should we do now? We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. पैर ठीक हो जाना चाहिए भाई ऐसा हम लोग कब तक चलेंगे
बाकी यार मज़ा आ रहा होगा तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो. Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot dish night. हेलो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दो और ये शेयर भी कर देना लाइव स्ट्रीम. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I don't know. Neither do I. Well, let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Hey, man. Holy shit! Don't eat us. We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. What are क्या you चल doing? रहा है? Trying to get home. This neighborhood's a disaster. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. I'm a neighbor. Her parents are out of town. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? Them monsters coming. We gotta go. Lee, quick. Let's go. Were any of those guys neighbors too? Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. रहने We का तो भैया. need a place to stay. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Okay then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. It hurts like hell.
I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? क्या बोलूं, car accident. Car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? Police officer. I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. We're done here. I didn't get your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I watched a man let himself get run over without blinking an eye. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you ये bright and बुढ़ाऊ को early. पहले हम लोग उड़ा देंगे, उसके Come बाद tomorrow, which way you think you're headed? बोल रहा है सीधा हमको Towards ठोकेगा. Lincoln, I suppose. All right then. It smells like... क्या बोलूं भाई, क्या ही मस्त ऑप्शन दिए. Shit. I'm sorry. I shouldn't talk like that. That was a swear. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. I love you, baby. ओके, चलो सेफ Hey, जगह तो आ get up. चुके हैं हम लोग. अभी क्या सोने भी नहीं देगा क्या? अच्छा, I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. ये आदमी मुझे That's my ट्रेवर boy, की तरह Ken लग रहा है. Jr. We call him Duck, though. Doc? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine.
Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. ओके चलो फिर हम लोग काम धंधा करते हैं कुछ। हर एक गेम पूरे एकदम ऑप्शन जो भी आते हैं उसे चॉइस करने के ऊपर ही पूरा गेम डिफरेंट हो जाता है। ओपी गेम है। You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. Sean's still working on that fence. Hey, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Damn. Oh shit, damn. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, एक का थोबड़ा फोड़ा है भाई मैंने। I had to shoot one. I could shoot one. Maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. I hope. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. How are these things to drive? Awesome! Pain in the ass, mostly. Big, heavy as hell, and slower than, अभी क्या करना है? Hey there, Kenny. Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? I think I've got it handled okay. Long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe. Sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. I'll keep that in mind. How's your son doing? Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's.
We're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. See ya. पक्की दाढ़ी You वाला have बुढ़वा such क्या pretty करता है? hair. It gets lots of tangles. देख क्या हो गया? How'd you get out of Atlanta? On foot. I headed south and hoofed it out of there. यार गाइस, मुझे एक शुरुआत में ही एक चीज़ बोल देनी चाहिए थी, और वो है हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। आगे कुछ ही दिनों बाद हैप्पी न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर। पहले यही इसका ही हैप्पी क्रिसमस भाई सबको, जो भी देख रहा है ये वीडियो। पता है वो कल बीत चुका है हैप्पी क्रिसमस, तो क्या ही कर सकते हैं। अब लाइव स्ट्रीम हमारा 12 बजे के बाद ही स्टार्ट हुआ था। Girlfriend? My parents are in Macon with my brother. Well, I hope they're all right. But now you got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah, I was looking for help in her house. Can I give you a piece of advice? Sure. I don't know who you are or what you did, but you better become a better liar, and fast. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're going to have to depend on the honesty of strangers if you're going to make it. And if those same people get to questioning yours, you're going to be in trouble. So whoever you are and whatever you did, keep it to your damn self. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Go! I'll get my gun! भाई क्या करना है? उसके बाद जाता है बच्चा यार, वो उसको बचा लेंगे। पकड़ लो। I got you. Now, Sean. Get this tractor off of me! Please, help me, please! भाई बंदा होगा यार, एक आदमी भाग गया था, बचा सकते थे इसको भी। Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. And you didn't even try to help. I'm sorry. Look at him. Sorry is no damn good. Please, just go. Get out and never come back. You've got that ride to Macon if you want it.
This is as far as we're going. And it's far enough. यार एपिसोड 2 को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में, तो आज के लिए बस इतना ही।